Good morning, class. Let us now discuss the reverse logistic in traditional forms. We have already discussed that reverse logistic means the goods or the product is coming from the consumer back to the manufacturer. The reasons may be replacement or repair or something like that, or return. Okay. So here in this slide, we'll be discussing कि traditional forms जो थे ना, how they were managing the flow of goods from the final destination back to their manufacturer. Okay, for any reason, for the return, for repair, recycling, disposal, कोई भी reason हो, लेकिन how they were managing. So the very first thing you can just see here is returns management, means handling the return good items from the customers, retail stores, है ना, customer से आए, retail store से आए, distribution center से आए, including the inspection, documentation, disposition decisions. So this was the first step that they do. Okay, next is they assess those return product, है ना, उसको देखते हैं, assess करते हैं for the repairment defect, कि किसमें repairment चाहिए, किसको refurbish किया जा सकता है, so that it comes to a sellable position or sellable condition to minimize the loss. Third, what they did, the traditional firms, they identify the items that can be resold or refurbished and divert them to recycling facilities, right, to recover material or to reuse that. Okay, next क्या करते हैं is disposal, means properly disposing जो item बिल्कुल खराब है, that cannot be used or refurbished or reused, then those item needs to be properly disposed of. Okay, ensuring that it does not harm the environment. Like if you remember, we have discussed the case study of Tata, how it is managing with the used battery. Okay, uh, I have included that slide in the next coming videos. We'll be covering that case study also. So you have understood how the traditional firms were managing. They were just managing the returns, and then they were assessing the return products. Then they were identifying the item that can be resold or refurbished, and then disposing of properly. Okay. Here, what were the challenges? The challenges were that the limited visibility into return items, since they were not using the data analytics, right? So they were not getting the real-time data, and also they do not have the transparency into the condition. जैसे कि right now, when you return the goods in the e-commerce companies with the Flipkart or something like that, then you have to give the reason why you are returning. So दे आइडेंटिफाई प्री हैंडेड, दे आइडेंटिफाई गुड पहुंचने से पहले उनको पता होता है कि अच्छा इसमें क्या डिफेक्ट है, तो वो पहले से सोच लेते हैं कि व्हाट कैन बी डन, इसको रीयूज करना है, रिटर्न करना है. अगर आपने बोला कि द कलर इज नॉट मैचिंग, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ वेस्ट, दिस कैन बी सोल्ड टू अदर कस्टमर्स, है ना. लेकिन आपने बोला कि द प्रोडक्ट इज लाइक इज ऑलरेडी वेयर, मतलब फटा हुआ है या ऐसा कुछ है ना, so that means the good needs to be like disposed or needs to be revisit and all these things, right? So ट्रेडिशनल फॉर्म्स के साथ क्या प्रॉब्लम था ना, उनके पास विजिबिलिटी नहीं थी. दे वेर ओके, दे वेर नॉट, the customers were not very transparent about the visibility into the condition, the quantity and the reasons for return were not there. ठीक है, तो इसकी वजह से they have to yeah, they have to then again plan and optimize the reverse logistic efficiently. Okay, next is the high transportation cost. Since the the reverse logistic, it also include the transportation of goods from all the multiple locations, means सारे जो उनके retail stores है उन सब को उन सब से लेकर इनको आना है वापस बैक टू द सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी. हर जगह से नहीं है, एक सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी है जहाँ पे हर जगह नॉर्थ ईस्ट, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, हर जगह का जो है कमला एंड ऑल द रिटेल चेन से जो है जो भी रिटर्न हुए गुड्स वो एक जगह पे आएगा, सेंट्रलाइज्ड जगह पर आएगा, एंड देन फिर प्रोसेस, रिटर्न, डिस्पोजल, ये सारा कुछ होता है. इसके वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी हाई हो जाता है एज कंपेयर टू these e-commerce companies. Okay, also inefficient processing methods. Inefficient means they were using this traditional companies, they are using some manual or outdated processing method. They are not using data analytics,
and thus they are facing delays and errors and inefficiencies in handling these returned items, and that is leading to the increased cost and dissatisfaction among the customers. Okay, so how can these be this reverse logistic be made efficient for this traditional firms? So they should focus on minimizing the cost, means they can use they should focus on optimizing the reverse logistic. They should focus on reducing the transportation cost, minimizing the inventory holding also, and lower the processing cost. Okay, so that can save the firm, right? Other than that, they can maximize the value recovery, means they can efficiently manage the return, repair and refurbish processes. मतलब इनका process जो है वो थोड़ा simple और थोड़ा मतलब segmented अगर हो जाए, then traditional firms can maximize the recovery of value from the returned product also, है ना, कि वो जल्दी पता लग जाए कि इस प्रोडक्ट में क्या है, जल्दी शॉर्टिंग हो जाए तो उसको क्या कर सकते हैं, सेल आउट सीजन में निकाल सकते हैं, राइट? The third is they can if they timely process the return goods and accurately handle the refund, है ना, फटाफट वो गुड ये पैसे जो है वो रिफंड कर दे या रिप्लेस कर दे, then they can maintain the customer satisfaction and loyalty, है ना. इन दिस ई कॉमर्स कंपनी वी सी कि जैसे हमने रिटर्न किया हमें रिफंड आ जाता है विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स, है ना. सो दिस इज द ईज इन ई कॉमर्स, and this need to be applied or adopted by the companies, traditional firms. Okay, so here I have taken the real world case study where I have taken the case study of Best Buy reverse logistics. So Best Buy is basically एक electronic retailer है US का, ठीक है. तो in the case study I'm just telling you what is the case study. The case study is about the reverse logistic कि ये ना एक electronic retailer है जिस जहाँ पर रिवर्स लॉजिस्टिक बहुत हाई रेट से हो रहा है, मतलब रिटर्न जो है वो बहुत हाई रेट से हो रहा है, इसलिए इनको अपना रिवर्स लॉजिस्टिक जो है मेंटेन करने में इश्यू आ रहा है. तो इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स दैट दिस बेस्ट बाय कंपनी हैज अडॉप्टेड इज, सबसे पहले दे हैव इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी. इसका मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है एडवांस डेटा एनालिटिक्स में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स लगाया हुआ है टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी इनटू द रिटर्न आइटम, है ना, ताकि रियल टाइम डेटा ट्रैक हो सके कि कौन कौन सा गुड्स रिटर्न हो रहा है, टू ट्रैक द रीजंस व्हाई इट इज बीइंग रिटर्न्ड एंड ऑप्टिमाइज द इन्वेंट्री लेवल. नेक्स्ट व्हाट दे हैव डन टू एड्रेस दिस चैलेंजेस, दे हैव adopted a centralized return processing center also, है ना. सेंट्रलाइज्ड रिटर्न प्रोसेसिंग है, उसमें क्या हो रहा है ना, दैट इज एंड दैट सेंट्रलाइज्ड रिटर्न प्रोसेसिंग सेंटर इज आल्सो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट सच अ लोकेशन दैट there is proper this transportation hub near to that and thus reduce the transportation cost. Third, उन्होंने क्या किया है कि they have done a partnership with the third party providers. Listen this carefully. Partnership with the third party providers का मतलब क्या है, बेस्ट बाय ने क्या किया है कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का यूज किया है. इसका मतलब वहां के लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन है, लोकल जो लॉजिस्टिक्स है, दे हैव यूज्ड देम एंड they have made partnership with them and allowed them with the data analytics and allowed them to short the good and refurbish them. Okay, so such as repair, refurbish, and allowing these company to the main company to focus on its core business. ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी रिटर्न और शॉर्टिंग का कि इसको रिफर्बिश किया जाए, रिप्लेस किया जाए या क्या किया जाए, ये पूरी की पूरी जो है ना वो आउटसोर्स इन्होंने कर दी to the third party and then they are able to focus on the core business of the company. ठीक है, so these are the decisions that the Best Buy company this Best Buy customer electronic retailer has taken to address the challenge of the reverse logistic. ठीक है, तो एक इन्होंने तो इन्वेस्टमेंट किया टेक्नोलॉजी पे, इन्होंने डेटा एडवांस डेटा एनालिटिक्स लगाया और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह सही किया ताकि रियल टाइम डेटा ट्रैक हो पाए एंड रिटर्न्स का रीजंस पता लग पाए. दूसरा इन्होंने क्या किया कि दे हैव इंट्रोड्यूस अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, मतलब कि ऐसे जगह पे लोकेट किया वो मतलब सेंट्रलाइज्ड रिटर्न सेंटर्स कि it is near the transportation hub and or the distribution hub so that ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिलीवरी टाइम जो है वो कम हो जाए, है ना. थर्ड, उन्होंने क्या किया, ये सारा जो टेंशन है रिवर्स लॉजिस्टिक का दे हैव गिवन टू द थर्ड पार्टी सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस. नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, दे हैव
प्लान फॉर द कस्टमर फोकस्ड इनिशिएटिव. कस्टमर फोकस्ड इनिशिएटिव कहने का मतलब क्या है? बेस्ट बाय ने क्या किया कि दे हैव इम्प्लीमेंटेड कस्टमर फ्रेंडली रिलेटेड पॉलिसीज. उन्होंने जो पॉलिसीज रिटर्न के बनाए दैट वाज कस्टमर फ्रेंडली एंड the windows were so hassle free that आप आराम से return कर सकते हो and thus they have gained the satisfaction and loyalty of the customer, right? So this was the game that the Best Buy did played to improve the efficiency and cost effectiveness of the reverse logistic operations. Okay. यहाँ मैंने एक इंडियन केस स्टडी भी लिया है टाटा मोटर्स का. सेम हियर टाटा मोटर जो अपनी इंडियन लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, इट इज आल्सो फेसिंग द लाइक अ चैलेंज. इसका चैलेंज क्या है कि इट इज फेसिंग द चैलेंज इन मैनेजिंग द व्हीकल कंपोनेंट आफ्टर द यूजफुल लाइफ. जब यूजफुल लाइफ व्हीकल का खत्म हो जाए तो फिर उसका क्या करें, ये चैलेंज है. ठीक है, तो we know that sustainability has to be taken care of. There are many regulations related to the environment that the company need to follow. तो इस केस में ये टाटा मोटर्स क्या करे? तो टाटा मोटर्स ने क्या किया हुआ है? टाटा मोटर्स ने क्या किया कि इट हैज इम्प्लीमेंटेड दीज प्लान्स. पहला क्या है कि कलेक्शन नेटवर्क. ठीक है, तो टाटा मोटर ने क्या किया है कि बहुत सारा अक्रॉस द कंट्री उन्होंने बहुत सारे, आपको ये नजर नहीं आ रहा है गेस ना? ओके, now better. So what Tata Motor did is it had a widespread collection network across the country. पूरे कंट्री में इन्होंने बहुत सारे थर्ड पार्टी नेटवर्क बना लिए और जिनको इन्होंने टास्क दिया that they have to collect those batteries. Okay, then they collaborated with the authorized service centers and dealership to collect the used automobile. ठीक है, और फिर इन्होंने कोलैबोरेट किया वो सारे ऑथराइज सेंटर से, सर्विस सेंटर से, जो ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, बैटरीज एंड इंजन. देन व्हाट दे डिड इज दे हैव द प्रोसेसिंग सेंटर्स. ठीक है, तो प्रोसेसिंग सेंटर में क्या होता है? क्लासिफाई, सॉर्ट एंड मैनेज ऑफ द ऑल द कलेक्टेड यूजेबल पार्ट्स, कि किसको रिफर्बिश करना है और किसको रिसाइकल करना है, राइट? देन they had done vendor partnership. They partnered with their specialized vendor, जो इनके specialized vendors हैं उनके साथ partnership किया और उनको responsibility दी for the recycling of this hazardous, क्योंकि बैटरी तो hazardous product है ना, तो इसलिए they have to take care of the sustainability and environment and thus they are doing this. तो इन्होंने एक वेंडर पार्टनरशिप जो कि इनके मतलब द वेंडर दैट इज रिलायबल टू दिस टाटा मोटर्स, they partnered with them and they gave the responsibility of recycling this. And then they also have adopted a technology. इन्होंने ERP system वगैरह अपनाया to collect the data related to these components. Okay, and the real time data management was done to take better decisions for future reuse or refurbish. Reuse करना है, refurbish करना है, recycle करना है, क्या करना है? They have used technology here. Okay, the data analytics here. Then they did the customer engagement, means they educated the customer कि अगर आप return करोगे तो क्या फायदा होगा. They educated the customer about the environment harm and they offered initiate incentives to the customer कि अगर आप return करोगे you'll be getting some points or some reward points. Okay, so like this they saved the environment, they saved the cost and they complied all the environment regulations. And this is what is expected from the companies कि वो reverse logistic अगर कर रहे हैं then they should take care of the environment as well. Okay, so that's it for this video. In the next video we'll be discussing about the e-commerce and how they are managing their own reverse logistics. Okay, so thank you so much. If you have any doubt, please comment in the comment box. Bye bye.